Question number 26. Question number 26. What is the expression for kinetic energy, incident radiation, and threshold radiation or threshold frequency? E incident is equal to E threshold E incident is plus equals to kinetic energy. E threshold plus kinetic energy. So if you can see here, जो kinetic energy है is equals to incident energy minus threshold energy. So it is directly proportional to the incident energy, na? So as the incident energy increases, the kinetic energy also increases. ये तो एक constant है. The threshold energy for a given metal will be constant. Okay. So kinetic energy बढ़ता जाएगा if we are increasing the incident energy. So ये पहला जो graph है, that is the right graph, correct graph. Okay. ये वाला value क्या हो जाएगा? This value is nothing but E threshold. Okay. Second जो है with respect to frequency of light. If I am increasing the frequency of light, the kinetic energy in this case is remaining constant. Will that be a constant? You can also write Ke is equals to h nu minus some h. We are increasing the nu incident frequency. तब kinetic energy भी क्या होगा? बढ़ेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करेंगे वो जो एनर्जी है उतना ही ज्यादा हो रहा है. So the electron will be ejected out with greater kinetic energy. So it won't be a constant. So ये graph है, गलत है. So this is the wrong graph. So 2 is the most appropriate answer. Third graph जो देखो, third graph जो है, even in this case, वो जो graph है, it has to start like this. यहाँ से start होना चाहिए था. Kinetic energy. Prasad, please be quiet. Yeah. और जो ग्राफ है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था बिकॉज देर विल बी सम न्यू नॉट. ओके. इस बोल. Sir, Hello, sir. Hello, sir. Hello. Hello. Disconnect. Sir. it got disconnected. Give me 2 minutes.
ओके मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द थर्ड ग्राफ, ये जो थर्ड ग्राफ है ना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एग्जैक्ट में आप लोग को ऐसा दिखना चाहिए बिकॉज यू आर हैविंग सम न्यू नॉट। इस पर्टिकुलर ग्राफ में दे आर कंसिडरिंग द न्यू नॉट एज 0। ओके, देयर इज नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। कोई भी फ्रीक्वेंसी आप डालो उसके अंदर से, मेटल के अंदर से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर, which is the ideal case। ऐसा नहीं रहेगा, there will always be some minimum amount of energy that will be required। okay, so out of these two options, ये option तो बिल्कुल ही गलत है, इसके वजह से answer is 2। but if they are giving you the question in more than one option questions, you can mark both 2 and 3। okay, is this clear? Yes, Yes, sir. okay, question number 27। question number 27, they have given you the ground state energy of hydrogen atom। ground state energy क्यों दिया है आप लोग को? in general ground state energy इसलिए दिया जाता है to know the value of RH। En is equals to minus RH z square upon n square ना। अगर z equals to 1 हो गया, n equals to 1 हो गया, तब RH का वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 13.6 हो जाएगा। so in case of second excited state, first excited state is second orbit, second excited state is third orbit। third orbit में एनर्जी पूछ रहे हैं, third orbit में एनर्जी क्या होगा? it will be minus 13.6 into z square is 4 upon n square is 9। यही है ना, minus 13.6 into 4 upon 9। so I think the answer comes out to be 6.04। Yes, yes. Minus. minus 6.04। okay, okay, question number 28। heat treatment of muscular pain involves radiation of wavelength of about 900 nanometers। which spectral line is suitable for this particular purpose? आप लोग ऑप्शंस चेक कर सकते हो। ऑप्शंस चेक करने से पहले 900 नैनोमीटर्स जो है, इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ इंफ्रारेड रीजन। आप लोग ये पता होगा, विजिबल रीजन का रेंज इट इज अबाउट 750 नैनोमीटर्स तक। ठीक है, अगर उतना पता भी नहीं है, यू कैन कैलकुलेट इट। एक एक ऑप्शन आप लोग चेक कर सकते हो। पैशन सीरीज इन्फिनिटी टू 3, इनफैक्ट वही आंसर है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेव नंबर? 1 by lambda is equals to r z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। r कितना है? 1 into 10 power 5 centimeter inverse। z square is 1 by 9 minus infinity square, 1 by infinity is 0, right? so this is lambda कितना हुआ? 9 into 10 raised to minus 5 centimeter inverse ना। if you are multiplying it by 100, dividing it by 100, तब क्या होगा? it will be 900 into 10 raised to minus 7 centimeter inverse। what is 1 nanometer equal to? 10 raised to minus 9 meters 9. or 10 raised to minus 7 centimeters ना। 1 Yes, meter is sir. equals to 100 centimeters। so इस particular case में I can write this as 900 nanometers। so मिल गया ना हमको wavelength, right? so the answer is option A। okay, what is the work function? इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, but आ जाएगा। what is the work function of the metal if the light of wavelength 4000 angstroms generates photoelectrons of velocity 6 into 10 power 5? what is the formula? h nu incident is equals to work function plus kinetic energy। so work function is nothing but h times nu incident
और hc upon lambda minus ke. What is the value of hc? 2 into 10 raised to minus 25. Lambda is 4000 into 10 raised to minus 10 meters होगा. Minus ke is half mv square. Calculate कर सकते हो ये. First you will get the answer in terms of joules. You need to divide that by 1.6 into 10 raised to minus 19 to get the answer in electron volts. Calculation करके दिखाना है क्या आप लोग को या कर सकते हो? कर सकते हैं सर. कर सकते हैं ना? I'm not Yes, sir. calculating this. If you are having any doubt in the calculation, आप लोग बाद में करके please send me your query. Okay? मास आप लोग को 9.1 into 9 into 10 raised to minus 31 ले सकते हो. Velocity is 6 into 10 power 5. You will get this answer in terms of joules. एक बार joules में आने के बाद you need to divide that by 1.6 into 10 raised to minus 19 to get the answer in electron volts. Okay. Question number 30. If the de Broglie wavelength of the electron in nth orbit of a hydrogen-like atom is 1.5 pi a naught, where a naught is the radius of the first Bohr's orbit. Okay. Then the value of n by z पूछ रहे. What is the formula for de Broglie wavelength? मैंने क्या बताया आप लोग को? Whenever you are given Actually, then Bohr's radius, always use mvr is equals to NH by 2. nh upon 2 pi. What is de Broglie wavelength? H upon mv na? H upon mv is nothing but 2 pi r upon n. It is 2 pi r upon n. So in the question they gave you 2 pi r upon n equals to 3 by 2 pi. Okay. What is r? R is nothing but 0.529 times n square upon z na. That 0.529 is nothing but a naught. First Bohr's orbit का radius 0.529 होता है ना. That is given as a naught. So in place of r, इधर लिख रहा हूँ. In place of r, substitute a naught times n square upon z. नीचे n और एक है. Is equals to 3 by 2 pi a naught. आपको pi a naught cancel हुआ. एक n cancel हुआ. So n upon z क्या आया? It equals to 3 by 4. n upon z value चाहिए हमें. n upon z is 3 by 4. So the answer is 0.75. 0.7. I think question number 29 का आंसर 2.1 आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ये क्वेश्चन समझ में आया? The important thing which you need to keep in your mind is whenever they are connecting de Broglie's wavelength and Bohr's theory, always use mvr equals to nh upon 2 pi. We already know de Broglie wavelength is h upon mv. So rearrange करो. h upon mv क्या आया हमें? 2 pi r upon n. And यही हमको de Broglie wavelength हमको दिया है 1.5 pi a naught. So उसी को equate किया. But ये r है. This is in terms of a naught. What is the relation for r? R is 0.529 n square upon z. This 0.529 is nothing but a naught, first Bohr's orbit का radius. So r के place में a naught into n square upon z put किया मैंने. So by substituting that we got n upon z as 3 by 4. बाकी सब cancel हुआ. Clear है? Okay. Question number 31. Question number 31. The total number of orbitals associated with principal quantum number 5. कितना है formula? What is the formula for N total number square. of orbitals? It is nothing but n square. ये formula तो याद हो जाना चाहिए सबको. देखो number of orbitals के लिए n square, number of subshells के लिए
What is the formula for number of subshells? 12 plus 1. Subshells, number of subshells in a given shell is n. Number of orbitals in a subshell, एक subshell के अंदर कितना 12 ऑर्बिटल plus 1. है? That 12 is plus equal 1. to 12 plus 1. Okay. And number of electrons 2n square. 2n square. is equals to 2n square. इतना ही है. Good. So they're asking about number of orbitals, so it is n square, which is equal to 25. Next, if the principal quantum number is 6, the correct sequence of filling the electrons. एक बार आप लोग क्या क्या दिया है इसमें, ns n minus 2f. You can solve this by using n plus l rule. और जो n plus l rule होता है ना, वो यूज करके आप लोग फाइंड कर सकते हो. You are given 6s, n minus 2f मतलब 4f, np मतलब 6p, n minus 1d मतलब 5d. What is the n plus l value for this? इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए भी 7, इसके लिए भी 7 ना. So सबसे पहले 6s में फिल होगा. उसके बाद क्या होगा? The one which is having lower value of n. Lower 4f. value of n किसके लिए? 4f. उसके बाद 4f. 5d. उसके बाद 6p. 5d. So answer is B. Okay. The order of filling of electrons will be according to their energies. You can get the idea on energy by using n plus l values. The one which has lower n plus l will have lower energy. If two things are having same n plus l, compare the value of n. Is this clear? Okay. Question number 33. I think exactly same question हमने classroom में भी किया. सबसे पहले क्या करना है? You need to write the A. Option is A. Good. सबसे पहले करना क्या है? Everyone, जो लोग ने नहीं किया. First of all, you need to write the electronic configuration. It is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. यहाँ तक 30 होता है. उसके बाद 4p6, 36 हो गया. 4p6 के बाद 5s1. So the valence shell is in n equals to 5, l equals to 0. l 0 है तो ml भी 0 होगा. Spin can be plus or minus half. So the answer is A. Okay. The first step is to write the electronic configuration and to identify in which orbital the electron is present. Question number 34. In an atom, how many orbitals will have the quantum number n equals to 3, l equals to 2, ml is equals to plus 2? Already दे दिया है 1 ना? electron. 1. Okay. One electron है, one orbital. Electrons जैसा पूछा तो you will be having two electrons. How many orbitals will be? 1. 1. 1 orbital. Okay. So the answer is C. Question number 35. I think ये question भी आप लोग को क्लास में करवाया मैंने. n equal to 5, ml is equals to plus 1. n equals to 5, ml equals to plus 1. n equal to 5 में क्या क्या रहेगा आपको? l का वैल्यूज क्या रहेगा? l will be 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. So ये 1 में आप लोग को plus 1 रहेगा, 2 में भी plus 1 रहेगा, 3 में भी plus 1 रहेगा, 4 में भी plus 1 रहेगा. So you have 4 orbitals which are having n equal to 5 and ml is equals to plus 1. Okay. समझ में आया? So 4 orbitals मतलब electrons Yes. कितना हो जाएगा? 4 into 8. 2 nothing but 8 electrons. D ये जो option. पर्टिकुलर क्वांटम नंबर है ये तो पूरा दे दिया ना. यू आर गिवन 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स. उसका यूनिक एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा. सो इट विल बी 8 and 1. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. एवरीवन फील फ्री टू आस्क डाउट्स. सारे पेरेंट्स मीटिंग्स में हमने यही कहा है, फील फ्री टू आस्क डाउट्स. क्वेश्चन नंबर 36. अगेन 36 और 37 गलती से दोनों सेम ही आ गया. आप लोग को एक क्वेश्चन बोनस जैसा ही है. इफ यू नो हाउ टू सॉल्व 36, you need to calculate the value of n plus l. Yes, sir. This has n plus l 5, this has n plus l 4, ये भी 5, ये भी 4. One which has same n plus l है तो lower n देखना है. So D will be having the least energy. उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद ये D B C है. Option is B.
नेक्स्ट वाले केस में वो 1 2 3 4 B. जैसा हुआ है, बट एग्जैक्टली एवरीथिंग इज सेम, राइट? सो ये भी बी. Yes. व्हाट इज meant by isoelectronic species? Having same electrons. Same Having electronic configuration. No. same electronic configuration नहीं, same number Same of number of electrons. electrons. Number of electrons. Same number of electrons. isoelectronic मतलब same number of electrons उतना ही. Okay. ठीक है. So B. इन electrons find कर सकते हो. NO positive में देखो, नाइट्रोजन में you have 7 electrons, ऑक्सीजन में you have 8. NO positive मतलब you एक remove 1 electron, right? एक कम. -1, so it will be 14. 40. C2 2 minus मतलब कार्बन में you have 6 2 electrons. C2 मतलब 12 हो गया, 12 plus 2, which is 14. again equal to 14. Cn minus मतलब कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, minus Plus मतलब you are 1. adding 1 electron. Plus So ये 1. भी 14. So 14. N2 is 7 also 2s are 14. 14. Okay. So ये most common question है, isoelectronic species पूछते हैं. You need to see total number of electrons. You should not, some people just see the valence electrons. Valence electrons देखना नहीं होता है, total electrons देखना है. Okay. So the answer is B. 39. Again they're asking the highest energy. Again one of the easiest questions. Energy के लिए आप लोग को इतना ही देखना है. देखो ये सारे क्वेश्चंस तो मिनिमम कर लेना चाहिए. बहुत सारे बच्चे ये भी अटेम्प्ट नहीं किया है. So एनर्जी के लिए आप लोग को इतना ही देखना है. n plus l value. Higher the value of n plus l, higher will be the energy. n plus l value सबसे ज्यादा किसका है? 3 plus 2 5. Answer is C. Okay. Okay. Question number 40. In a multi-electronic atom, which of the following orbitals will be having same energy in the absence of electric and magnetic fields? A. Answer. First of all, they must be belonging. They must be belonging to Option same. A. Yeah, they must be belong. Yeah, they must be belonging to same subshell. N equals to 1, L equals to 0. मतलब क्या हो जाएगा? This is 1s ना. N equals to 2, L equals to 0. This is 2s. This is 2p. This is 3d. This is also 3d. So ये भी 3d है, ये भी 3d है. They will be having same energy in the absence of electric and magnetic fields. What will happen in the presence of fields? Electric and magnetic fields के presence में? और degenerate orbit नहीं रहेंगे. Oh, why is this? उनका ओरिएंटेशन अलग होगा ना. उनका ओरिएंटेशन अलग होने की वजह से it depends upon the direction of the electric and magnetic field. और किस डायरेक्शन में अप्रोच होगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगा. This we will be exploring even in detail in our 12th. Okay. Okay. So in the presence of electric field, the splitting is called as Stark Zeeman. effect. Stark effect. Stark effect. Electric field, Stark effect. Magnetic field, Zeeman effect. Zeeman effect. Okay. ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है एक बार जेई मेंस में. इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following sets of quantum numbers is correct for a 4f orbital? F मतलब L has to be 3. 3. So and n equals to A. 4. So okay, sorry. C. Option C A. नहीं A. A, option A. C नहीं, option A. L the values of ml range from -3 to +3 ना. Yes sir. Yes, sir. -3 से लेके +3, +4 एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, ये गलत होगा. So answer is A. 42. Again they are asking number of L equals to 1 and 2 में कितना है. L equals to 1 मतलब P में हो गया, 2 में E मतलब and D. D.
So configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 है ना? What is the reason for this? Why is it having 4s1, 3d5? Symmetry. Symmetry Because and of changing. and because of exchange energy. Yes, sir, exchanging. You will have more number of exchanges if you are having 5 unpaired electrons rather than 4. Okay, ठीक है. And moreover, half filled. All the entire subshell is half filled, so there is some symmetry. So D में कितना है? D में 5 है and P में कितना है? 12 है. So it is 12 and 5. The number of D electrons retained in Fe2 positive. So पहले आप लोग को Fe का configuration लिखना पड़ेगा, उसके बाद Fe2 positive का. Fe का configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. 6 sir. 4s2, 3d6. 3d6. Fe2 positive matlab you need to start removing from the outermost 4s. shell. Outermost shell is 4s. So it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6. 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 So the answer is 6. Okay, question number 44. The third line from the red end. N equals to 2 हो गया. 3 to 2 will be first line. 4 to 2 will be 5 second is line. to 2. 5 to 2. ये first line हुआ, second line हुआ, third line हुआ. N equals to 2, 3, 4, 5. So 5 to 2 जो भी है, it is the third line. So answer is A. 45th question, easiest. And h by 2 pi. N upon 2 pi. So it is pi h 2 upon 5 by it is 2. 2.5 h upon pi. क्वेश्चन नंबर 46 ए बी इजी है. एल का वैल्यू आपको एस का पता होना चाहिए. सो इट इज 0. सो केमिस्ट्री में आप लोग बहुत ज्यादा टाइम भी बचा सकते हो. क्वेश्चन नंबर 47 h upon lambda. Lambda is equals to h upon mv. MV Equals to h upon root over 2k 2ke. 2 MeV. Ke is equals to q into v. QV. In this case it is ev. So h upon lambda क्या हो गया? It is root over 2me into v. Yes. This is sir. also most V. common. Most common. वोल्टेज के अंदर डाल देंगे कोई चार्ज को, then the kinetic energy achieved by it is q times v. Very very important here. Question number 48. D7 configuration में total spin 3 by 2 plus minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so total spin कितना है? Plus half, plus half, 3 plus half. into half. It is 3 by 2. 1.5. Plus or minus है. ऊपर भी और रह सकता है, नीचे भी रह सकता है. So it is. D. What is spin? So what will be the spin angular momentum? H upon 2 pi 1 into points. root over s into s plus 1. S and Yes, S. sir. Yes So sir. it will be h upon 2 pi into root over 1.5 into 1.5 plus 1, 2.5. This will be the spin angular momentum. Yes. sir. Okay. What will be the angular momentum? Orbital angular momentum. If they ask you what is the orbital angular momentum of the unpaired electron, कौन सा है? D. P is equal to h upon mv. It is a root over L into L plus 1 into h upon 2 pi. Orbital D. angular momentum. L D orbital. no? d orbital है ना? So d has to be 2 आएगा. 2 आएगा. Root over 2 into 2 plus 1. 2. 2, 3 or 6. Root 6. 3. Okay. Question number 49. 8 neutrons, 10 protons. 10 neutrons, 8 protons. Okay. 10 neutrons and 8 protons. 8 protons. Yes, sir. Number of neutrons is given by
8 electrons है ना? No, yes, sir. 18 minus 8 number of neutrons, which is mass number minus atomic 10. number 10, and atomic number is 8, so protons are 8. Answer is D. Question number 50. If the uncertainty in the measurement of position of an electron is 0, then what will be the uncertainty in its momentum? Infinite होगा ना? Infinite. Yes. Yes, sir. What is the formula? Lambda Delta x, x into delta x into delta p is greater than equal h upon 4 pi. 4. अगर एक का वैल्यू 0 है तो दूसरा इनफिनिट रहेगा. Yes, sir. ओके. ठीक है. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's discuss the homework question. सर Yeah. सर वो लास्ट वाला नहीं समझ में आया. किधर है? अभी जो लैम्डा डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 दिया है ना, h upon 4 pi divided by 0 मतलब वैल्यू which is close to 0. अभी 0 मत पुट करना. अगर इन केस आप लोग 0 पुट कर दिया तो क्या होगा? It will be H upon undefined. 0. Okay, h upon 0 it is undefined. अभी हमको ऐसा देखना है, the value is very very less if it is very close to 0. If you are dividing by a number which is very very less, so ये वाला value क्या होगा? This value will be very very high, large और infinite होगा. Okay? Yes. ठीक है. क्लियर है ये? अभी क्लियर हुआ? यस सर. ओके. ओके. होमवर्क क्वेश्चन सब लोग होमवर्क किया है? एवरीवन? ओके. सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना है या आप लोग को कुछ डाउट्स है? या किया ही कि नहीं पहले? सबसे पहले Sir, tomorrow discuss. टुमारो डिस्कस. Not done, sir. Okay, solve 1 to 5 questions now. Balmer series मतलब first of all the transition is from, सबसे पहले ऐसा आइडेंटिफाई करो Balmer series. So the transition must be from n equals to n to come to, they are saying shortest wavelength. Shortest wavelength मतलब highest energy. Highest energy मतलब it has to be series limit. Series limit मतलब infinity to 2 पे जो भी jump होगा, that will be having the highest energy. So wavelength, what is the formula for wavelength? 1 upon lambda is equals to r z square into 1 by n square minus 1 by n2 square. Yes, sir. This implies 1 by lambda is equals to r into z is 4, that is 2, 2 square is 4, 1 by n1 square मतलब ये भी 1 upon 1 by 4. 4 minus 0 हो जाएगा. Yes. So what is value of R. lambda? Lambda is nothing but r. R. Wave number. Lambda नहीं, wave number. Lambda. Okay. Solve question number 2.
fast. Please attempt the homework questions. जब homework questions attempt करेंगे तभी आप लोग को कुछ doubts आएंगे and you can ask me and you can improve. Last line of Lyman series of hydrogen atom has frequency nu1. Last line of Lyman series of helium positive has frequency nu2. And first line of Lyman series of helium positive has frequency nu3. The relation between nu1, nu2, nu3. As the lines belong to different atoms, hydrogen or helium में है ना, different atoms की वजह से try to calculate the values and get the relation. Get the values in terms of RH. उसके बाद ही देखना better रहेगा. Am I erasing this part? देखो सब लोग, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. लास्ट लाइन मतलब क्या होगा? Infinity to 1. Lyman series limit. Last line is nothing but series limit, which is infinity to 1. उसके लिए energy और photon h nu is equals to RH. हाइड्रोजन के लिए it will be 1 square into 1 by 1 square minus 0. So in this case, nu is equals to RH upon, they are saying it is nu1 na. Nu1 is equals to RH upon H. Okay. Last line of helium positive, H nu2 is equals to RH into 4 hoga. Yes. Yes, sir. So nu2 is equals to 4 RH upon H. And what will be nu3? And they are saying it is first line of nu3. 1, 2, 3. H nu3 is equals to RH into 4 times. First line is 2 to 1. So it is 1 minus 1 by 4, which is equals to 3 by 4. So nu3 is equals to 3 RH. Calculation करके लिख रहा हूँ, 3 RH upon H. 3 by 4, 4 4 cancel हो जाएगा, 3 बचेगा ना. So nu1 nu3, very good. Nu1 plus nu3 equals to nu2. News. Okay. So the answer is D. D. Answer is D.
क्वेश्चन नंबर 3, if lambda 1 क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखो पूरा Yes, sir. स्ट्रक्चर आप लोग ऑब्जर्व किया तो हम एक ही फॉर्मूला के पीछे पढ़ते हैं हमेशा, which is delta E is equals to RH Z square into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. And basic formulas are E is equals to H nu, C is equals to nu lambda. इनके अलावा और भी कुछ किया क्या हमने? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, डी ब्रॉगली के लिए mv आर इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई, क्वांटाइजेशन इतना ही है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स. कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया इसमें, no matter how complex they make the question, always you can solve it. Question number 3, if lambda 1 and lambda 2 are respectively the wavelengths of series limits of Lyman and Balmer series of hydrogen atom and the wavelength of first line of Lyman series of hydrogen atom. इस particular question आप करने के लिए you can use the diagrammatic analysis कर सकते हो. Can I erase this solution? Question Yes, number 2 का sir. everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, इसमें डायग्रामेटिकली करो, इमीडिएटली हो जाएगा. मैं मान रहा हूँ ये इन्फिनिटी मान रहा हूँ. ओके, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ये इन्फिनिटी टू 1, ये एक लाइन होगा. सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज ये वाला लाइन होगा. दे आर आस्किंग द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब ये होगा. ओके, ये लैम्डा 1 दिया है, ये लैम्डा 2 दिया है, ये लैम्डा 3 मान लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ओके, ये E1 मान लेते हैं, ये E2 मान लेते हैं, ये E3 मान लेते हैं. E2 plus E3 must be equal to E1. E2 क्या है? Hc upon lambda 2. E3 क्या है? Hc upon lambda 3 is equals to Hc upon lambda 1. So 1 upon lambda 3 must be equal to 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2. So lambda 3 will be equal to lambda 1 lambda 2 upon lambda 2 minus lambda 1. So answer is D. Answer is D. Everyone solve question number 2. Question number 2 जो करेंगे उनको I will gift something. जो करेंगे आप लोग अपना घर का एड्रेस बोल दो, Amazon से कुछ गिफ्ट लेके आपको भेजता हूँ, some book or something. Question number 4. Question number 4. Solve this question. Chocolate question, yeah, whatever it is. If you tell me the exact explanation of this, we'll send you some gift. Classroom में तो आप मिल नहीं सकते ना. Question number 4. Everyone, alert. Take 5 minutes of your time, solve this. Tell me the appropriate explanation. अगर कुछ रैंडम बोला तो मैं अपना मेरा घर का एड्रेस दे दूंगा, आप लोग मुझे भेज देना. आया समझ में? सॉल्यूशन समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Okay. 1240 corresponding energy is 10 electron volts. 2000 angstrom corresponding energy is 6.25 electron volts. If it absorbs 10 electron volts of energy, its energy will become minus 3.6 electron volts. We don't have an orbit which is having 3.6, that minus 3.6 energy. Hence, the electron won't be absorbing that photon as there is unavailability of that particular orbit. Similarly, 2000 के बराबर से put किया तो the energy of the electron must become 7.35 electron volts. Again, you don't have any orbit corresponding to that particular energy. So these two photons, इन दोनों का sum add किया तो 13.6 से ज़्यादा हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. Okay. Question number 5.
Which of the following statements are incorrect? Option A, all spectral lines belonging to Balmer series of hydrogen atom lie in visible region. Is True. that true? True. True, Yes, sir. sir. That is true, right? Yes. Oh, okay, good. Option B, if a light of frequency nu falls on a metal surface having work function h nu naught होना चाहिए, h nu naught, photoelectric effect will take place only if nu is lesser than equal to nu naught. Lesser than or equal to क्या? False. False. Greater False है than ना? It equal. has Greater than or to equal. be greater than False. equal to. Okay, good, very good. C और D भी देख लेते हैं. The number of photoelectrons ejected from a metal surface in photoelectric effect depends upon intensity of radiation. सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. True. True, sir. True. Provided the energy is sufficient. Yes, sir. Okay, energy sufficient है तो तभी हम मान लेंगे इसमें एनर्जी सफिशिएंट ही होंगे. ऑप्शन डी, द सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज, मतलब इट विल बी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर r Yes, upon sir. 4 आएगा. Lambda. तो True है, true. 4 by r. तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 अपॉन r. वो भी सही है. True. ओके, नेक्स्ट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सब सम पैराग्राफ दिया है, आप लोग को पता ही है, ये सारा ऑलरेडी पता है. डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चले जाते हैं. Solve question number 6 to 10 fast. You have 15 minutes of time. Solve questions 6 to 10. सर Yeah. वो सिक्स क्वेश्चन में वो फिफ्थ स्टेट दिया, वो एक्साइटेड स्टेट है या रेगुलर वाला स्टेट है? Fifth question में fifth कौन सा? Fifth. सॉरी सिक्स Sixth question में एक्साइट मतलब वो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है या फिर फिफ्थ स्टेट मतलब n equal to 5? it is fifth state. These electrons were initially in n equals to 5, n equals to 6, n equals to 7. वैसा ही है. Not the excited state. आंसर चैट में देना है क्या? Yeah, you can put your answer in chat. सारे questions कर लेना. सर चैट में मैसेज किया तो बोल रहे यू आर नॉट इन मीटिंग. Okay, then it's okay. बाद में डिस्कस करेंगे. आप लोग सॉल्व करके अपने पास रखो, मैं पूछता हूँ आंसर्स.
Sir, Yeah. Question number 6 देखो सब लोग. Question number 6, everyone. In a hydrogen-like sample, electrons are in a particular excited state. If the electrons make transition up to first excited state, matlab they are coming to n equals to 2. Okay. Then it produces maximum of 15 different types of spectral lines. 15 different spectral lines होने के लिए n into n minus 1 upon 2. 6 into 6 minus 1 upon 2 ये 15 आता है ना. ओके. बट वो n equals to 2 पे आ रहा है. ये कब फॉर्मूला एप्लीकेबल है? whenever the transition is from n equals to n to n equals to 1. ओके. सो इसको -1 करने से ऊपर का भी -1 करना पड़ेगा. सो 7 -1 किया तो तब जाके 6 होगा ना. if you want to apply n into n minus 1 by 2, मैंने आप लोग को क्या कहा? if you want to apply this formula n into n minus 1 upon 2, it has to come from n equals to n to n equals to 1. अगर वैसा नहीं है तो अभी ये क्या हो रहे? 2 पे आ रहे हैं ना. so it will be coming from some n plus 1 to 2. ओके. सो इसको -1 किया तो इसको भी तब -1 करेंगे. then you can apply the formula. so इस particular part पे you have 6. so the state which it is coming from is 7 to 2. 7 to 2 is equivalent to transition from 6 to 1. समझ में आ रहा है? so the electron is initially present in the 7th state or the 6th excited state. so answer is C. is this clear? Yes, sir. Yes, sir. everyone, answer is C. समझ में आया ना? so second पे आ रहे वो. second पे आते समय 15 lines है which is equivalent to coming from 6 to 1. so 7 to 2 is equivalent to 6 to 1. number of lines must be same. the energies will be different. 7 to 2 पे जो lines आएंगे और 6 to 1 पे जो lines आएंगे, there can be of different energies. question number 7. the difference between the wave number of first line of Balmer series and the last line of Paschen series. कर सकते हो ना? Yes, sir. R by 4. So R by 4. R by 4. R by 4. ओके ओके. सब लोग को यही आए तो ठीक है, कर सकते हो. आई थिंक अभी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे कर लिया हमने. क्वेश्चन नंबर 8. electrons are making transition from 4th excited state, मतलब n equals to 5. n equals to 5 to n equals to 2, n equals to 1. n equals to 5 से लेके n equals to 1 पे transition हो रहा है. maximum number of wavelengths. if the second lowest energy photon, second lowest energy मतलब क्या हो जाएगा? first lowest energy will be 5:1. 5 to 1. lowest 2 to 1. energy. 2 to 1. lowest energy. okay, first lowest energy is 2 to 1. second lowest energy 3 will be to 1. 3 to 1. okay. no, एक मिनट रुको. वन पे नहीं देखना है. मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ना. Yes, 5 sir. to, या मैंने थोड़ा गलत किया. 1 2 3 4 5. व्हाट आर द डिफरेंट लाइंस? ये होगा, ये रहेगा, ये ठीक है, राहुल, क्या है?
Hello, sir. Hello. Yeah, got disconnected again. Everyone, please concentrate again. We need to take all possible wavelengths. So 5 to 1 transitions pair, you will have 10 lines. 4. Out of these 10 lines, the least energy will be of 5 to 4, right? Yes, sir. Second least energy matlab the transition is from 4 to 3. 4 to 3 मतलब एनर्जी क्या हो जाएगा? E will be is equals to RH Z square, which is 1 square into 1 by N1 square. 1 by 9 minus 1 by 16. ओके, सो ये जो एनर्जी है किसके बराबर हो सकता है? एक बार ऑप्शन बी देखो. इट इज RH Z square is 9 into 1 by 9 square minus 1 by 12 square. I can write that 9 square as 3 into 3 whole square minus 3 into 4 whole square. अभी 3 square कॉमन लिया दोनों से, तब क्या हो जाएगा? RH into 9 into 3 square कॉमन लिया तो 1 by 9 into 9 minus 1 by 9 into 16 हो जाएगा. Yes, sir. तब ये 9 कैंसिल हो जाएगा. देखो सेम आया ना, RH into 1 by 9 minus 1 by 16. सो जो 4 to 3 पे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, that particular energy photon can be used for the transition of the electron which is present in Li2 positive from 9 to 12. 9th ऑर्बिट से 12th ऑर्बिट पे लेके जाने के लिए वो एनर्जी यूज कर सकते हैं हम. सो आंसर इज बी. ओके, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 9. क्वेश्चन नंबर 9. n equals to 6 from n equals to 6 to n equals to 3. क्या करना है हमको? 6 to 3 है ना, so convert that into corresponding 1 पे ट्रांजिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? It will be 4 to 1. 4 to 1 मतलब 4 into 4 minus 1 divided by 2. 6 spectral lines है. Okay, so 6 lines आएगा and these lines will belong to infrared region. So पहले जो क्वेश्चन है, it can be more than one options, matching भी more than one हो सकता है. So ये
पहले के लिए R भी रहेगा, S भी रहेगा. 6 lines in the spectrum and spectral lines in infrared region. 7 to 3. 7 to 3 वाला 7 to 3 मतलब -2 which is corresponding to 5 to 1. 5 to 1 मतलब 10 lines होगा. So this will be P as well as again the lines will be belonging to infrared region. 5 to 2 is exactly equal to 4 to 1. 4 to 1 मतलब again R and Q. Visible region होगा ना. 6 to 2 again it is like 5 to 1. So P and Q. Yes. I hope this is clear. Yes, sir. Question number 10 कर सकते हो. 3 RC/4 इतना फ्रीक्वेंसी के फोटोन कब रिलीज नहीं होगा करके पूछ रहे. Cannot be emitted from which of the following transition. क्रॉस चेक कर लेना सब. Yes, sir. I hope 10th कर सकते हो आप लोग. And these questions we have already discussed some questions. बस इनमें you need to calculate spin magnetic moment root over n into n plus 2 where n is the number of unpaired electrons. जिन लोग ने भी ये सॉल्व नहीं किया है प्लीज सॉल्व कर लेना आज. In next class we will start radial probability distribution curves. That is the last part. हो जाएगा next lecture में. After next lecture we will start with periodic table. Okay. If you are having any doubts in today's questions, please message me. Bye, sir.